बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कभी न दुख झेलेंगे, खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, ना जाए क्या पर जाए क्या हो। हम जग बिछाएंगे, अब ये पाएंगे, हम लोगों का दर्जा क्या हो। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। अब डर नहीं मन में आवे, चले चलो चले चलो, हर बेड़ी अब खुल जावे, चले चलो। वही जो तेरा हाकिम है, जालिम है, की है जिसने तबाही, घर उसका पश्चिम है, यहाँ न बसने पाए। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, ना जाए क्या पर जाए क्या हो। हम जग बिछाएंगे, अब ये पाएंगे, हम लोगों का दर्जा है क्या हो। जो होना है हो जाए, चले चलो चले चलो, अब सर ना कोई झुकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। बार बार हाँ टूट गई जब बोलो यार हाँ, उंगली मुट्ठी, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बन गई
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो, तुम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना। बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो, तुम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, ओ हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, हम है नए। सावधान! जय शिवान! जय शिवान! सामने देखना मैम, सामने देखना। बच्चे आप आ जाओ, एक साइड आ जाओ।
काला गोरा पाना ओरे सोगदियां दिए ओरे सोगदियां दिए कुड़िए ओरे सोगदियां दिए ओरे सोगदियां दिए कुड़िए ओरे सोगदियां दिए अच्छरिए कुड़ी लम्बी हो नीचे भला कांगड़े दी कुड़ी लम्बी हो लारा लट्टा अच्छरिए लारा लट्टा हो कांगड़े दे छोरो कन्ने नारे गप्पा हो कजो खड़ोती ओ निगरिए कजो खड़ोती ओ मेरे कांगड़े दे आसे पासे कजो खड़ोती ओ मेरे कांगड़े दे आसे पासे कजो खड़ोती ओ तू मिठे बोल बोल माहिया हाँ बोल माहिया वे में बंगा चढ़ा बढ़िया तू सद बढ़ जा रे नारे जो वे में बंगा चढ़ा बढ़िया चिट्टी वो कमीज काली रेखा हो रेखा दिखी लगदा बुलेखा हो वो कमीज काली रेखा हो रेखा दिखी लगदा बुलेखा हो दीदिया कान्हा मेरिया मैं पगड़िया न तोड़िया मेरिया भैया ना मरोड़िया घर मेरा सोरा सियाना दिल जान अड़िया घर मेरा सोरा सियाना दिल जान अड़िया दिल जानिए कांगड़े दिया चिड़िया बंस बजे हो तेरे जो चर गया जो मिल जो सके हो
छबीली गोरी पानी में जो चली है, चैन छबीली गोरी पानी में जो चली है, नायों में चलक गई है खंड खंड ओ लहरिया हो। This day is certainly a special one for all of us as we are celebrating our annual day today. Relationships and connections. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for our worthy chief guest, Mr. Ravindra Talwarji And Mrs. Lalita, DAV College Managing Committee, New Delhi, and graceful Mrs. Lalita Talwarji, former mentor from DAV Public School, Panchkula. We welcome you both with all our heart and soul on behalf of DAV Centenary Public School, Mandi. We are truly, truly blessed and honored to have you with us today. I welcome Shri G.K. Bhatnagar-ji, Manager, DAV Centenary Public School, Mandi. Sir, thank you so much for sparing your precious time for us. It is our esteemed pleasure to welcome the Honorable ARO HP Zone F, Mr. Namit Sharma ji. Sir, we are honored to have you with us today. A special guest, Mr. Harbans Kumar Anand ji, is amongst us, retired Chief Engineer, Department of IPH. A warm welcome to you, sir. My heartfelt welcome to Mrs. Vandana Guleria ji for gracing our annual day with her presence. Thank you, ma'am, for kind and gracious presence. I extend my heart to welcome the respected LMC members. A warm welcome to all the esteemed principals from the prestigious DAV institutions. My sincere gratitude and welcome to all the respected parents for honoring us with your gracious presence. I welcome all the media persons who have joined us today to cover the annual function. Today, it is not just an annual day, but a gathering of dreams, dedications, accomplishments, and recognition of joy and unity. Welcome to this grand occasion, Samprati Utsav, celebration of time. It is my proud privilege to introduce our Honorable Chief Guest, Mr. Ravindra Talwarji, with all of you. Sir is a distinguished personality whose contributions and achievements have left an indelible mark in his field. He has got the supreme honor to receive a national award in the field of education by the President of India. He was honored as the Man of the Year in 2003 by the American Biographical Institute, USA.
honored with prestigious award Arya Ratna by the President of Sarvadeshik Prathinidhi Sabha, New Delhi. At present, he is the President of Indian Council for Environment Education and Chairman of Hindustan Scouts and Guides. Sir, we are highly fortunate to have you with us today. A huge round of applause for the guests of the day. I welcome his better half, Mrs. Lalita Talwarji, a gracious and a vibrant lady. Thank you for gracing this occasion, ma'am. Now, can we have the honor to have our distinguished chief guest, Mr. Ravindra Talwarji, Mrs. Talwarji on the stage. My humble submission to ARO cum host principal, Mr. K.S. Guleria ji, to escort worthy guests to the stage. I request Mr. G.K. Bhatnagar ji, Mr. Namit Sharma ji, Mr. Harbans Anand ji, and Mrs. Vandana Guleria ji to kindly join the ceremony on the stage. Where love abounds in every space, may you find peace and hope as you are welcomed with hearts so true. Mr. G.K. Bhatnagar ji, Manager, DAV CPS Mandi. Thank you, sir. A humble request again to Mr. Guleria ji to adorn Mr. Namit Sharma ji, ARO HP Zone F with ceremonial robes. And present the planter. My humble request to Mr. Ravindra Talwarji to decorate our special guest, Mr. Harbans Kumar Anand ji, with ceremonial robes. And present the planter.
talented dancers who will now grace our stage with their beautiful lamp lighting dance. Let's give them a warm round of applause. Ladies and gentlemen, please welcome them.
What a beautiful elocution of dance steps. प्रकाश की लहरों में लय का संचार, दीप और नृत्य ने किया अद्भुत श्रृंगार। हर गति में छिपा सौंदर्य का एहसास, आपकी कला ने छुआ सबका। Please request everyone to stand up for the DAV गान। प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन, जीवन दायिनी सदा सनातन, वेद प्रणीता परम पुनीता, ये धारा अक्षय, DAV जय जय, DAV जय जय। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले, धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय, DAV जय जय, DAV जय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे, सघन शांतिमय an exemplary leader, a compassionate mentor, a distinguished educator, and a gifted communicator. A kind-hearted leader who has earned a Mr. K.S. Guleria ji. Please give him a huge round of applause. Good morning to one and all present over here. At the outset, Shri Ravinder Talwar ji, Secretary DAV College Managing Committee, a mentor, a guide, a philosopher, a moving encyclopedia about the Arya Samaj and DAV. Sir, we are honored to have you amongst us as a chief guest for the day, and I am thankful to you that you had your program in Chhattisgarh, and on my personal request, sir, you have abundant धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ Madam Talwar ji ka, who has always shown. Thank you very much for gracing this occasion, ma'am. I would like to extend my hearty welcome to the person of Swagat. I have got a very special friend today, Shri Namit Sharma ji, who is the regional officer of the DAV and is looking after DAV Ambota as a president, a philosopher, and oftenly we work together in a team. तो मैं आपका भी यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ सर। I would like to extend a hearty welcome to all the principals of the zone. If I start taking name, it will take me some time. I don't want to waste the time. मनाली से लेकर के अम्बोटा और नदौन तक के प्रिंसिपल हमारे पास आए हैं, जो कि बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। कुछ टीचर्स प्रिंसिपल जो नहीं आ पाए, उन्होंने अपने टीचर्स भेजे हैं। देहरा से भी टीचर्स आए हैं, नदौन अपने इसे नेरचौक से टीचर्स हैं, गोहर से टीचर्स हैं। मैं आपका भी यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। I would like to extend a warm welcome to all the parents, and I am thankful to you that you have always supported any idea which has come from our side, and you have stood rock solid with me, and it is because of your efforts that whatever results we could achieve is only possible with your support and with the hard work of your students. I am thankful to the faculty members, to the supervisory heads, and the faculty members of the DAV CPS Mandi. जो मेरा एक छोटा सा भी विचार होता है, उस विचार को ये क्रियान्वित करते हैं कि किस तरह से हम इन बच्चों के लिए और इस समाज के लिए कार्य करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Dear parents, if we talk about the results, it will be shown in the
slides later on, लेकिन मैं छोटा सा एक बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 160 बच्चे 10वीं कक्षा में अपीयर हुए थे। उनमें से 59 बच्चे हमारे 90 प्लस मार्क्स लेकर के उत्तीर्ण हुए। ये छोटी बात नहीं है। 97.6 स्टाफ की लगन और आप पेरेंट्स का आशीर्वाद है कि ये बच्चे इतने मेहनती हैं और जो भी इनको टीचर्स बताते हैं उसको एक अच्छे रूप से लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं सभी पेरेंट्स का। +2 का रिजल्ट अगर हम बात करें तो हमारे 28 students have scored 90 and above marks. It's not a less feat. Please clap for all those students who have scored this 90 and above marks. अगर हम कंपटीशन एग्जामिनेशंस की बात करें तो हमारे 9 हमारे डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए हैं और जिस भी क्लैट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है इसके लिए उन सब बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, उनके शिक्षकों को भी बधाई और सभी पेरेंट्स को भी उनके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एक बार फिर मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ क्योंकि कार्यक्रम कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया है, मैं उस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा जो म्यूज़िक विभाग है मैं उन सब तीनों टीचर्स का बहुत बहुत सोच करके आप लोगों के लिए लाया है। तो इसके बीच में मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं एक बार फिर आप सबका इस सभागार में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय डीएवी। Good morning, ladies and gentlemen. Legacy, a legacy that began in 1985, our beloved DAV CPS. And what a beautiful coincidence it is, as we mark the 40th Raising Day with the celebrations of our annual function, Sampratyutsav. The theme beautifully captures the essence of time, its rhythm, its lessons and its eternal presence in our lives. Today, we celebrate Samaikotsav, a festival of time, the time that molds us, the time that guides us, and the time that inspires us. As the saying goes, time and tide wait for none. But today we pause to honor its significance through stories, performances, and reflections. Indeed, rhythm that reflect our commitment to excellence and innovation. Among these, the Silver Jubilee celebration and Samarpan Divas stand out as monumental occasions, hosting a massive audience and leaving an indelible mark on our legacy. These grand events brought together students, alumni, parents and dignitaries, showcasing their rich heritage, celebrating countless milestones and reinforcing our dedication to shaping future leaders with integrity and vision. Allow me to take you on a journey and the promise of a brighter tomorrow. Now let's turn our focus to the grand events that define our school's holistic vision. Very true, Amitesh. Our annual functions have always been a reflection of the school's innovative approach to nurturing and showcasing student talent, from theme-based events that highlight creativity and artistic expression to unique initiatives like Resonance, the Literary Conclave and the Grand Fate Fiesta. Each event reflects the vibrant spirit of DAV. The brilliance of young minds, the joy of collaboration and the spirit of healthy competition. Nestled in the serene valley of Mandi in 1985, DAV Public School is not just a building, it is a vision founded on the timeless principles of Arya Samaj. Here, education is not just about books but about life. It's about nurturing moral values, instilling discipline and fostering a deep respect for nature. Our school's architecture speaks volumes. Simple yet profound. Open courtyards and lush gardens remind us to stay rooted in the beauty of our surroundings, with spacious classrooms encouraging creativity and state-of-the-art facilities for subjects like science and technology. DAV Mandi ensures a perfect balance between tradition and modernity. This is where students not only grow in knowledge but also in character, ready to face the challenges of the modern world.
And as we gather here today, it is our privilege to present to you the annual report of DAV CPS Mandi. This report highlights our school's progress, achievements and vision over the past year. It is a reflection of our collective efforts and the relentless pursuit of excellence by our dynamic leader, diligent staff and hard-working students. So let's dive into the journey of the past year, a year filled with growth, learning and a myriad of accomplishments. DAV CPS Mandi, where excellence meets education, celebrating outstanding academic achievements. At DAV CPS Mandi, academic excellence has always been a hallmark. We believe that education is not just about acquiring knowledge, but also about shaping young minds to become thoughtful and innovative individuals. We're extremely proud to announce that our students have once again demonstrated exceptional performance in the board examinations. Our school has achieved a remarkable pass percentage of 100%, with 60 students scoring above 90% in class 10th and 22 in class 12th. The academic session 2023-24 has been a year of remarkable achievements for DAV Mandi. In AISSC class 10th, Pallavi Thakur emerged as the top scorer with an impressive 98%, followed by Nandini and Kartika Sharma with 97.8%. In AISSC class 12th, Dhruv Sharma excelled in Science Medical with an outstanding 97.8%, and Shivam Goyal from Non-Medical secured 95.2%, followed by Mannat Kaur in Commerce achieving 94%. In Humanities, Saksham secured the highest score with 96%. This year, we secured the highest marks, setting a new benchmark for others to follow. We congratulate our brilliant students, the dedicated mentors and parents for their hard work and perseverance. At DAV Mandi, distinction isn't just a goal, it's a tradition. Our students continue to make us proud by achieving remarkable milestones, from securing prestigious selections in IITs and top medical colleges to competitive fields. They have truly set benchmarks in all walks of life. The academic brilliance of DAV Mandi continues to shine through its exceptional achievers. In JEE 2024, Shivam Goyal secured an impressive score of 98.12, closely followed by Manan Gupta with 97.79. Other commendable performers include Asmeet 93, Harshita 91, Arsh 90.63 and Samriddhika 83.09. The NEET 2024-25 results were equally remarkable, with Ankita Thakur leading with a score of 680, earning admission to IGMC Shimla, and Dhruv Sharma following with 676, also joining IGMC Shimla. Ashanya Thakur 647, Janvi Kapoor 621, Romil 597, Sejal 591 and Nishant 583 further showcased their excellence, securing seats in esteemed medical institutions. In Commerce, Siddharth cleared CA Intermediate Group 1 and Shaurya Sharma passed CA Intermediate Group 2, both achieving this feat on their first attempt. In Humanities, Saksham excelled with a CUET score of 764 and gained admission to Hindu College, Delhi University. These outstanding achievements reflect the dedication and hard work of the students and their mentors. Each achievement adds another feather to our cap, reflecting the dedication of our teachers and the hard work of our students. Let's applaud their brilliance and commitment, which continues to bring laurels to our school. Welcome to this celebration of creativity, growth and achievements at DAV CPS Mandi. At our school, education transcends the boundaries of classrooms and textbooks. Our mission is to shape well-rounded individuals equipped to excel in all facets of life. Let's begin by highlighting our commitment to spiritual growth. The 200 Kundli Havan was a momentous event that reinforced our values of peace,
positivity, and unity. Following this sacred ritual, we celebrated the Vedic Satta, an enlightening session that deepened our understanding of ancient scriptures and their relevance in today's world. These events instill spiritual strength and connect us to our cultural roots. Moving on, we cultivate leadership in our students through events like the investiture ceremony. This year, we conducted democratic electoral polls, empowering our students to elect leaders who represent their voices. Leadership, after all, is the foundation of future success. The democratic electoral polls were a reflection of our commitment to nurturing responsible and visionary leaders. Students actively participated in electing the head prefects, captains, and vice captains, showcasing the spirit of democracy. Each candidate presented their vision and students cast their votes, making their voice count in shaping the student council. Dharvi Malhotra and Devansh Sharma were bestowed with the titles of the head prefects for the session 24-25. Showcasing talents beyond the classroom, DAV CPS Mandi continues to shape creative horizons for our students through initiatives like One Mahotsav, plantation drives, and dedicated efforts of our Eco Club. We reaffirm our commitment to a greener planet, actively engaging students in environmental conservation and sustainability for future generations. Our students also shine brightly in the realms of art and culture, whether through theatre performances, street plays, or various competitions. They consistently showcase their creativity, confidence, and storytelling prowess. Through a range of inter- and intra-school activities, our students have made a significant impact not only within the state but also beyond. These events educate, entertain, and inspire, fostering cultural and social awareness. In the arts, our students have displayed exceptional talent in painting, music, and dance, captivating audiences with their performances. Annual events like the debate competition and quiz contests have seen remarkable participation, highlighting our students' eloquence, intellectual curiosity, and passion for knowledge. These co-scholastic activities have provided students with invaluable opportunities to develop teamwork, leadership, and a strong sense of community. In addition, we believe in guiding our students with wisdom and experience. Our guest lectures by mentors and experts broaden their horizons, helping them make informed decisions about academics, careers, and life. No human is complete without compassion. At DAV CPS Mandi, our social outreach programs exemplify this belief. Visits to old age homes, blood donation camps, Diwali celebrations, and partnerships with organizations like the Smile Foundation teach our students the importance of giving back to society, making them empathetic and socially responsible individuals. We take immense pride in celebrating national events like Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti with unparalleled enthusiasm and patriotism. These occasions are marked by unique endeavors such as awareness drives, Run for DAV marathons, and cleanliness campaigns. Through these activities, we not only honor the spirit of these significant days, but also instill in our students a sense of responsibility, unity, and commitment to societal welfare. We also take immense pride in cherishing the bonds within our community. Events like Grandparents' Day showcase our respect and gratitude for the older generations. These celebrations strengthen family ties and foster intergenerational understanding. Our teachers are the guiding lights of our institution. Through teacher training sessions, we ensure they stay at the forefront of educational innovation. Furthermore, we celebrate their years of dedication and service with heartfelt retirement functions where we honor their invaluable contribution to shaping young minds. From academics to co-curricular, from spirituality to social service, each moment at DAV CPS Mandi is a step towards excellence. These events remind us of the unity, talent, and passion that define our school. We take immense pride in our students and alumni who continue to bring laurels to the institution. Our alumni have excelled in diverse fields, including academia, entrepreneurship,
arts, sports, and public service, making their mark on both national and international platforms. Their achievements stand as a testament to the strong foundation and values instilled at DAV CPS Mandi. In the realm of sports, DAV CPS Mandi has continued to raise the bar year after year. Our students have not only clinched numerous medals in inter-school competitions but have also made us immensely proud at district, state and national levels. The school proudly participated in a wide range of sports including athletics, yoga, basketball, volleyball, football, table tennis, swimming, kho-kho, cricket, chess, roller skating, badminton, taekwondo, kabaddi, boxing and shooting. Each of these disciplines showcase the versatility, the hard work and the dedication of our young DAVians. Their spirit of teamwork and resilience has truly been inspirational, proving that success comes to those who strive for it relentlessly. This year, 445 students participated in cluster level competitions showcasing remarkable talent and determination. With 150 students representing the school at the district and state level, we saw extraordinary performances that ultimately took around 80 champions to the national stage. The students of DAV Mandi have displayed exceptional talent at the national level in sports, bringing glory to the institution. Kashmir Thakur shone in basketball, securing a gold medal, while A.S. Ranjan and Aniket made their mark in boxing by winning a silver and a bronze medal respectively. In Taekwondo, Yashasvi Thakur earned a silver medal, with Anshita Lusai and Darshita bagging bronze medals for their stellar performances. Arshvedya in Pinchak Silat secured a bronze medal. Additionally, Gunvansh excelled in karate, also securing a bronze medal. These remarkable achievements highlight the dedication and hard work of the students, reflecting the school's commitment to fostering excellence in sports. Sports are not just about medals. They're about shaping character, discipline, and leadership. Alongside our sports achievements, we take immense pride in the accomplishments of our NCC A Wing and Army Wing. These programs have instilled a sense of patriotism, responsibility, and self-discipline among our cadets. From excelling in camps to showcasing their skills in parades, our NCC cadets have truly embodied the spirit of service and excellence. Absolutely, Adarsh. To further nurture the spirit of adventure and resilience, our students participated in an adventurous tour at Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports. This tour offered them an opportunity to develop courage, teamwork and leadership skills, preparing them for the challenges ahead. From scaling new heights to overcoming fears, it was truly an experience of a lifetime. And let's not forget the hard work and dedication of our coaches and mentors who have played a pivotal role in shaping the talent and confidence of our students. Their guidance and motivation have helped our young champions to reach incredible heights and make DAV CPS Mandi proud on every platform. So, let's give a huge round of applause to all our sports stars and achievers who continue to inspire us with their passion and determination. Ladies and gentlemen, the future is bright with these young champions leading the way. Together, these milestones symbolize not just our achievements, but also our aspirations for the future. At DAV CPS Mandi, we continue to nurture individuals who lead with values, learn with enthusiasm, and live with purpose. Thank you for being a part of this celebration. Here's to many more milestones and memories at DAV CPS Mandi. Dear audience, as we reflect on the past, we must also look towards the future. At DAV CPS Mandi, we are committed to evolving and adapting to the changing educational landscape. Our vision for tomorrow is rooted in our belief that every student deserves an opportunity to excel and explore their unique potential. We are investing in the digital learning tools, enhancing
our infrastructure and exploring and providing extensive trainings for our faculty to keep up with the modern pedagogical approaches. Aligned with the principles of the National Educational Policy, we are working towards fostering critical thinking, creativity, and the spirit of inquiry among our students. Skill development is at the heart of our efforts, ensuring that the students are equipped with the competencies required for the success in the 21st century. By integrating the sustainable development goals into our curriculum, we aim to create socially responsible individuals who can contribute to the sustainable and inclusive world. The world is changing rapidly, and we aim to equip our students with the skills needed to thrive in the dynamic environment, whether it's through innovative teaching practices or a focus on the holistic development. We are laying a groundwork for the future where our students can succeed and make positive impact on the world. We look forward to creating new milestones together in the years to come. In conclusion, this annual report stands as a reflection of the hard work and dedication of our students, the untiring support of our dear parents, and the efforts of the teachers. Together, we have achieved much, and together we will continue to strive for the excellence. Let's celebrate these achievements today and set our sights on even greater goals for tomorrow. Thank you. Jai Hind. Thank you so much for setting the tone of this wonderful day today. Before we move on to the next overwhelming presentation, I would like to give you a brief overview of today, that is December 8th. As it has already been told, today is a very, very special day for the team of DAV Mandi, as we are celebrating not only our school's annual function, but also DAV Mandi, the best school in the town, has been performing exceptionally well in the arena of sports and education every year. Today, our school's alumni are holding high positions in Indian services, ISRO, and abroad. They are doctors, engineers, teachers, and we are proud to be part of this prestigious and unparalleled institution. Today, we all wish that our school will touch new heights of success and continue to progress. Thank you to all the parents for your cooperation and support. Thank you to everyone who is with us in our thick and thin. We will continue to work hard and strive for the progress of our school and the bright future of our students. अपनी अगली प्रस्तुति की ओर चलते हैं, जो कि एक काव्य विधा है जिसे हम चौपाई कहते हैं। चौपाई ये हिंदी साहित्य में मुख्य स्थान रखती हैं। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं और पंक्तियों का जो अंत है वो एक समान तुकांत में होता है। तुकांत का अर्थ है ध्वनि, लय या लय का मेल। आज भी हम एक ऐसी ही प्रस्तुति आपके सम्मुख देने जा रहे हैं जो त्रेता युग में अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समर्पित है। इन चौपाइयों के माध्यम से हमारे विद्यार्थी श्री रामचंद्र जी की लीलाओं और गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं। आप सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम आज इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम अगर आज भी अपने जीवन को देखें, भले ही हम आज मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में ही मंगल ढूंढ लिया था। भले ही हम आज पंछियों की तरह आकाश में उड़ना जानते हैं, मछलियों की तरह पानी में तैरना जानते हैं, परंतु इंसान की तरह इस धरती पर जीना शायद हम थोड़ा भूल चुके हैं। तो आज के इस प्रस्तुति से जो आने वाली प्रस्तुतियां हैं, हम यही चाहते हैं
कि हम जो श्री राम ने अपने जीवन मूल्यों को, अपने आदर्शों को अपने जीवन में उतारा था, हमारे आने वाली पीढ़ी उसी आदर्श, उसी मूल्य को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। तो आइए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम चौपाई। हमारी आज की पीढ़ी आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, जिसमें हम लगातार नैतिक मूल्यों का अभाव देख रहे हैं। इस युवा पीढ़ी को हम चाहते हैं कि हम अपनी जड़ों से जोड़कर रखें, उन्हें आशीर्वाद, नैतिकता और धार्मिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करें। और यह संभव है जब हम अपनी जड़ों से जुड़ें और जो हमारे आदर्शों का व्याख्यान करते हैं, उन महाकाव्यों से अपनी युवा पीढ़ी को अवगत करवाएं। Ladies and gentlemen, the stage is being set for the next presentation. And let's welcome our school choir who is going to present the next presentation, that is Chaupai. Huge round of applause for our next presentation. Ram
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। राम नाम की चौपाइयाँ सुनना तो एक तपस्या के समान है, जो हमें प्रभु श्री राम के आदर्शों के करीब ले जाती है। भारत में राम सिर्फ एक नाम ही नहीं है, ना ही वो भगवान का नाम है, वो तो हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन का आधार है। आज भी हमारे जीवन में अभिवादन जब भी हम करते हैं तो राम राम से करते हैं, और अंतिम यात्रा तक राम नाम सत्य तक राम हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। हमारी पाठशाला का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे अपने जीवन में सही रोल मॉडल चुने और सही उदाहरण उनके सामने पेश किए जाएं। आज का यह कार्यक्रम जो है उसी कड़ी का एक हिस्सा है, और यह तो शाश्वत सत्य है कि श्री राम जी से बड़ा रोल मॉडल कोई हो ही नहीं सकता। राम ही वो नाम है जो हमारे जीवन में निराशा के हजारों बंद दरवाजे खोल देंगे और हमारे जीवन को सत चित आनंद से रोशनी से भर देंगे। हमारी अगली प्रस्तुति जो है उसका मैं आपको थोड़ा सा विवरण देना चाहती हूँ। हमारी आज की युवा पीढ़ी आधुनिकता से लगातार उनमें नैतिक मूल्यों का हम अभाव देख सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। युवा पीढ़ी आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में हमें आवश्यकता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़कर रखें, उन्हें आशीर्वाद, नैतिकता और धार्मिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करें, और ये तभी संभव है जब हम उन्हें अपने महाकाव्यों को उनमें घटित हुई घटनाओं से अवगत करवाएं। भारतीय संस्कृति का आधार माने जाने वाले दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। इनमें से रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की धरोहर है और हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसमें हमारे जीवन के आदर्श और नैतिक मूल्यों का एक अद्वितीय उदाहरण है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों, संघर्षों और विजय का विस्तृत विवरण है, जिसे हम सब श्रद्धा और सम्मान से स्मरण करते हैं। आज के इस वार्षिक समारोह में हम इसी महाकाव्य का संगीतमय और नृत्यपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रामायण की कथा भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम जी पर आधारित है, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जानते हैं। यह महाकाव्य हमें सत्य, धर्म, प्रेम, आचरण, अनुशासन और विद्या के महत्व को समझाता है। श्री राम रघुकुल के ज्येष्ठ पुत्र, कर्तव्य परायणता, आदर्श, न्याय, सदाचार एवं सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। उनकी भार्या माता सीता को भारतीय उपमहाद्वीप में आदर्श पत्नी, शांति, करुणा, सहन शक्ति, पवित्रता, समर्पण, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। श्री राम का संपूर्ण जीवन चित्रण 7 खंडों में विभाजित किया गया है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के आदर्शों का प्रतिबिंब है। रामायण के संदेश से हर व्यक्ति विदित है, बुराई पर अच्छाई की सदैव विजय प्राप्त होती है। साथ ही हमें यह सोचकर संतोष रखना चाहिए कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना है, उनका पालन करते हुए कर्तव्यों का निर्वाह करना है। रामायण से हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करने, भाइयों से प्रेम करने, गुरु का आदर करने, अपने से छोटों को प्रेम और सम्मान देने, समर्पण भाव रखने, कर्म के प्रति निष्ठा और कर्तव्य का पालन करने जैसी सीख मिलती है, जो हमारी आज की पीढ़ी को सद्मार्ग दिखाने के लिए पर्याप्त है। हमारी आज की यह रामायण महाकाव्य की प्रस्तुति केवल नाट्य प्रदर्शन नहीं
बल्कि भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेने और उनके आदर्शों का अनुसरण करने की भावना है, जो हमारे युवा वर्ग को कई महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करती है। यदि हमारा युवा वर्ग इन आदर्शों का अनुसरण करने पर आ जाए तो आज हमारा समाज यकीनन छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि कुरीतियों से बच जाएगा। इन सब अच्छाइयों का परिपालन करने से बनेगा एक सदाचारी, परोपकारी, सहनशील और सामंजस्य से भरा हुआ समाज। हमारी अगली प्रस्तुति के लिए हमारा स्टेज अभी सेट हो रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि जो रामायण है वो 7 खंडों में विभाजित है। जैसे कि बालकांड की हम बात करें अगर, तो बालकांड में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री राम जन्म, सीता स्वयंवर और उनके तीनों भाइयों के विवाह के बारे में बताया गया है। वर्णन भी इसी में आता है। उत्तरकांड में श्री राम द्वारा रावण के वध से आगे की गाथा का वर्णन है। तो आइए इसी कल्पना के साथ साक्षी बने इस महाकाव्य के सजीव चित्रण की।